Welcome back to Droanacharya IAS YouTube channel. You're watching daily current analysis covering 20th July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे। आज हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में कुछ 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. So we'll understand what is this extended fund facility, and then we'll discuss Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022. Well, ये टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. फैक्ट बेस्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ से जो की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आई हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मेंस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट zero coupon, zero principal bond. Again, an important topic from Indian economy point of view. And then there is a temple in news which is important from GS1 architecture, which is Padmanabha Swami Temple. इसके बारे में जानेंगे. And then there's another topic important from art and culture, which is BONALU festival. So these are few topics that we are going to cover in this video. So let's begin with it. Starting with our first topic, Extended Fund Facility, EFF, Indian economy point of view से important है. तो basically पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच में कुछ स्टेट लेवल टॉक्स चल रही हैं, एंड दे विल कंक्लूड द 7th and 8th रिव्यू अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी. तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का IMF और पाकिस्तान के बीच में रिव्यू चलने वाला है. दिस वुड बी द 7th and the 8th रिव्यू अंडर दिस. So therefore it is important for us to know what is this extended fund facility. So this extended fund facility ये एक तरह से एस्टैब्लिश किया गया था ताकि ऐसी कंट्रीज जो कि काफ़ी पेमेंट इम्बैलेंसेस फेस कर रही हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके. सपोज कोई कंट्री है जहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स आ चुकी हैं, ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, या फिर इनहेरेंटली जो कंट्री है वो काफ़ी वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन में है, तो ऐसे कंट्री को असिस्टेंस देने के लिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी एस्टैब्लिश किया गया. ये एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है. जो भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स हैं, ऐसी पॉलिसीज़ जिनसे कि जो कंट्री है उसके अंदर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस ठीक हो सकते हैं, उन प्रोग्राम्स में, उन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी सपोर्ट करता है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड. पर्पस सिंपल है, ऐसे कंट्रीज के इकोनॉमिक प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना जिनसे कि उस कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी आ सके, वहाँ पे एक सस्टेनेबल मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन वो कंट्री अटेन कर पाए. दे should be consistent with strong and durable poverty reduction as well. Poverty reduction हो, growth हो, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए, मैक्रो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो, तो कंट्री के इकोनॉमिक प्रोग्राम्स में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो सपोर्ट करता है. एलिजिबिलिटी, कौन सा कंट्री एलिजिबल होते हैं? सी, इट इज एलिजिबल फॉर ऑल द प्रोग्राम्स विच आर फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट. ये एलिजिबल मेंबर्स जो हैं दे फेस प्रोटेक्टेड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम. तो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए ग्रोथ जिन कंट्रीज में कम हो रही है, ऑल सच एलिजिबल कंट्रीज जो कि इस तरह के बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उन सभी को ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. देन इफ यू टॉक अबाउट दी ड्यूरेशन एंड द रिपीटेड यूज. अब देखो, इस एक्सटेंडेड जो फंड फैसिलिटी है, ये जो अरेंजमेंट है, इसके थ्रू जो असिस्टेंस मिलती है ये इनिशियली 3 to 5 years के लिए मिलती है, एंड ओवरऑल जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रहता है दैट इज अप टू 5 years ओनली. और अगर सपोज ये जो इंटरवल था ये एक्सपायर हो गया या कैंसिलेशन हो गया, फिर टर्मिनेशन हो गई, देन एडिशनल अरेंजमेंट्स में बी प्रोवाइडेड. यहाँ पे जो मेजर फोकस रहता है कि हर एक मेंबर कंट्री जो भी है
जो भी पॉलिसी सेट दिए गए हैं जिनके ऊपर सबने एग्री किया है उसको इम्प्लीमेंट करें, एंड अल्टीमेटली उन पॉलिसीज को यूज करके दे शुड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द स्टेबल एंड सस्टेनेबल मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन। ये जो कमिटमेंट्स होती हैं, जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, वो जो कंट्री का लेटर ऑफ इंटेंट होता है उसके अंदर मेंशन्ड होती हैं, उन सबको फॉलो करना होता है, राइट? सो दिस इज योर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान को ये दी है, और अब उनके बीच में जो 7th और 8th जो रिव्यू है वो चल रहा है। सो देयरफॉर आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किसे देता है, क्यों देता है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट इज अबाउट ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022। रिसेंटली ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसे जीपी 2022 भी बोल सकते हैं, दिस टुक प्लेस इन इंडोनेशिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें ये आर्टिकल, इस न्यूज़ आर्टिकल की जो हाइलाइट्स हैं, these can serve as a very good value addition points. This can enhance your mains answer when it comes to disaster management. Also as a fact याद रखिएगा, इसमें कुछ फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट आएंगे। एक तो ये पता होना चाहिए आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस बार ये जो जीपी 2022 है ये इंडोनेशिया में हुआ है, ये फैक्ट याद रखेंगे। इस बार का थीम था फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल इन अ कोविड-19 ट्रांसफॉर्म्ड वर्ल्ड। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के पैटर्न उठाकर देखेंगे तो बहुत बार थीम पूछ लेते हैं। तो इस बार का थीम था फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल इन अ कोविड-19 ट्रांसफॉर्म्ड वर्ल्ड। ये जो हमारे पास इस बार 2022 ईयर जो है, दिस इज द फर्स्ट माइलस्टोन in the mid-term review of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Whenever you read disaster management, the most important framework over there is Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030. And is दौरान, this is one of the important as a first milestone as the mid-term review of it. जो आउटकम निकल के आया GP 2022 का, that was summarized in the co-chair बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस। तो इसको बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस में समराइज किया गया है। व्हाट आर दी की आउटकम्स? सबसे पहले डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर अप्रोच करेंगे। देखो, जब भी हम बात करते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में या फिर कहीं पे भी, कहीं आप डेवलपमेंट कर रहे हो, कहीं पे भी कोई फाइनेंस पॉलिसीज चल रही हैं, कोई लेजिस्लेशन आ रहा है, नया कोई प्लान बन रहा है, सबके प्लान में जो कोर होना चाहिए, दैट इज हाउ टू अचीव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। हमारी डेवलपमेंट, हमारी पॉलिसीज, हमारे प्लान्स ऐसे होने चाहिए जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कर रहे हों। Ultimately, these plans will achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development, and it will help us to achieve the Sustainable Development Goals. The biggest, the main cause or the real cost of disaster is of inaction. We must need to invest in the field of disaster risk reduction. पहले से ही जो रिस्क है उसे रिड्यूस किया जाए, इस तरह से डेवलपमेंट की जाए, इस तरह से पॉलिसीज बनाई जाए। So the first focus should be on disaster risk reduction. Next we have is climate change and ecosystem building. Currently अगर हम देखें तो greenhouse gas emission level काफ़ी बढ़ चुका है. It has exceeded its even mitigation as well. जिसकी वजह से आजकल जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। Ecosystem should be considered as a critical infrastructure.
and it should be recognized for their basic services. किस तरह वो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स लेकर आ रहा है, कैसे सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे हैं, कैसे कल्चरल बेनिफिट्स आ रहे हैं. We need to recognize this, and we need to treat ecosystem as a critical infrastructure. So disaster risk reduction and climate change adaptation, all of these have a common objective, that is to reduce the vulnerability. हमारे vulnerability को reduce करना and to enhance our capacity as well as our resilience. So the key thing that you need to know, the core of the philosophy here is that we need to reduce the vulnerability, we need to enhance our capacity and our resilience. Then comes the role of society, inclusivity. When we are talking about disaster risk reduction, we need, whole of society approach. We need to ensure that no one is left behind. We need a participatory and human rights based approach when it comes to the planning for disaster risk reduction, because the implementation is crucial, because actually the people are affected differently by the disaster, so we need to involve people. The role of society is very important. Also, the development of multi-hazard early warning systems, that is needed. It will be inclusive of communities which are at most risk. Then comes COVID-19 recovery, the need for transformative recovery from COVID-19 pandemic. We need to build back better, we need to build back greener, more equitable. तो जो रिकवरी है या फिर जो रिकंस्ट्रक्शन है, दे आर मोर सक्सेसफुल व्हेन दे आर कम्युनिटी ड्रिवन. जो एग्जिस्टिंग लोकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको सपोर्ट दीजिए, रेजिलियंस बिल्डिंग मैकेनिज्म्स लेकर आइए. अगेन comes the role of the community, comes the role of society. Also, when it comes to understanding the risk, this is very limited, particularly when it comes regarding all the emerging and future hazards. With government policies are largely reactive. What are the challenges? See, what we were talking about, that we need a whole of society approach. This might ensure us resources, but will not necessarily ensure focus on the most vulnerable communities and places. That is a challenge. The element that is for call for action, in which we are saying that we need to focus on leaving no one behind. It must ensure the focus but not the resources. Resources कहाँ से आएंगे? Corporates will look for maximizing their profits, and in that case they will disregard the effect of their activities on the environment. This is what we are seeing. We have so many examples जहाँ पे कॉर्पोरेट सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोच रहे हैं. दे नॉट फोकसिंग कि इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होगा. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट disaster risk reduction and the components of that, they need investment, and that will far outweigh its negative impact. So this particular clause over here is also a challenge. Apart from this, you should know about Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 and 2030. There was this third world conference in Sendai, Japan. This was adopted in this conference on March 18th, 2015. इससे पहले होगोइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन था. इट इज द सक्सेसर एग्रीमेंट, मतलब सेंडाई से पहले होयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन था फ्रॉम 2005 टू 2015, जिसमें मोस्टली जितने भी इंटरनेशनल अकॉर्ड्स थे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर वो सब इंक्लूडेड थे. बट आफ्टर दैट, at the third UN World Conference in Sendai, Japan, the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction was adopted. It basically applies to risk of small scale and large scale, frequent and infrequent, sudden and slow onset disasters, which can be caused by
naturally or by man-made hazards, as well as which are related to environmental, technological, biological hazards and risks. So all sort of disasters are included here. Sendai framework sets four priorities for action. Number one is to understand the disaster risk. सबसे पहले आप डिजास्टर रिस्क जो है उसे अंडरस्टैंड करेंगे. Then comes strengthening the disaster risk governance to manage disaster risk. आपने डिजास्टर रिस्क अंडरस्टैंड कर लिया, फिर डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस को स्ट्रेंथन अप करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. We need to invest in disaster risk reduction so that we can build up our resilience. We need to enhance the disaster preparedness for effective response, basically to build back better in recovery, rehabilitation, and reconstruction. So these are the specific priority actions which are set out in the Sendai framework. So now whenever you're thinking about disaster and disaster management, even in your mind, these 4 points should come as the priorities area. These are the priorities for action. Moving ahead, next comes disaster management in India. ये भी आपको पता होना चाहिए. I'm briefly gonna go through this. We have NDMA, National Disaster Management Authority. This is basically the apex statutory body for disaster management in India. This was established through the Disaster Management Act 2005. This Disaster Management Act basically envisioned the creation of NDMA. This NDMA is headed by Prime Minister. Similarly, we have State Disaster Management Authorities, SDMAs, and those are headed by the respective chief ministers. And the objective of this authority is to supersede and implement the holistic and integrated approach for disaster management in India. तो सबसे एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सी है? एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. नेक्स्ट यू नीड टू नो अबाउट नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ. अब 2006 में एनडीआरएफ को एस्टैब्लिश किया गया. दिस इज वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट फोर्स which is dedicated to disaster response. As the name suggests, National Disaster Response Force. They function under Ministry of Home Affairs, and for that there is overall command and control and leadership of the DG, Director General. At present, NDRF has 15 battalions from BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, and Assam Rifles. It is a multi-skilled and high-tech force, and they can very effectively respond to all kind of natural disasters, be it natural disaster, be it man-made disaster. They include building collapse, landslides, floods, cyclones. They are very multi-skilled and high-tech force. Then we need to know the initiatives done by India when it comes to disaster management. So India is definitely taking lead, and India is offering the expertise of disaster resilient infrastructure to the friendly countries. We are taking the lead and we are giving the expertise, we are offering them as the disaster resilient infrastructure. Then there is coalition of disaster resilient infrastructure. This was first proposed by India during 2016 Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. This was held in New Delhi. So this is CDRIA, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. ये इंडिया ने प्रपोज किया था 2016 में. Then we have HADR operations, humanitarian aid and disaster relief.
So Indian defense forces under the aegis of the headquarters, which are integrated by the defense staff, headquarter IDS, integrated defense staff, they're carrying out these operations within the country as well as in the neighboring countries. This actually deepen our coordination with the neighboring countries. India is helping the countries, they're focusing on sharing the expertise and building their capacity. Also, India has developed a large capacity for the production of COVID-19 vaccine, and India has even extending help to many countries for that as well. So, overall, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या की आउटकम्स निकले हैं, थीम क्या था, ये आपको पता होना चाहिए. Our next article is important from Indian economy point of view. It is about zero coupon, zero principal bond. ये न्यूज़ में है because recently our finance minister declared that zero coupon and zero principal instruments, these are securities for the purposes of Security Contract Regulation Act 1956. तो जीरो कूपन और जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स को सिक्योरिटी डिक्लेयर किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. तो इससे बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हेल्प मिलेंगी, जिसमें कॉर्पोरेट्स भी आ जाएंगे, दैट दे कैन यूटिलाइज देयर फंड मार्क्ड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, and they can also help the non-profit organizations to get fund in the more transparent manner. So it's a zero coupon and zero principal bond. इससे ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी कि वो ऐसे फंड्स जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मार्क किए गए हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं. दे कैन हेल्प नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दिस एंटायर थिंग कैन गो इन मच मोर ट्रांसपेरेंट मैनर. So let's understand zero coupon and zero principal instrument in much more detail. See, the zero coupon, zero principal instrument, this basically means that it is an instrument which is issued by not for profit organization, NPO. तभी तो बोल रहे हैं zero coupon, zero principal. It is issued by not for profit organization, NPO, which will be registered with the social stock exchange, which is the segment of a recognized stock exchange. ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये बहुत ही नोवल कॉन्सेप्ट है, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है. एंड सच अ बोर्ड इज मेंट टू सर्व द प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर. एंड इसके थ्रू, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल भेजी जाती है, चैनल आउट की जाती है. This idea was floated by Finance Minister in her budget speech of 2019 and 20 कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी होनी चाहिए. इट शुड बी दी सेपरेट सेगमेंट ऑफ इट. एंड social enterprises, they will be eligible to participate in these social stock exchanges. They should be the entities. इसमें NPOs आ जाएंगे, for profit social enterprises आ जाएंगे. They should have their social intent and impact as the primary goal. This entire instrument will be governed by SEBI, the Securities and Exchange Board of India. And we're calling it as zero coupon bond because as a debt security, it does not pay interest. Instead, it trades at a deep discount. इससे आपको profit मिलेगा when it comes to the level of maturity. So when the bond is redeemed for its full face value at the level of the maturity. That is why इसे हम कह रहे हैं zero coupon bond. Next comes Padmanabha Swami Temple. Recently, Supreme Court ने time extend किया है for carrying out the special audit of last 25 years of account of Shri Padmanabha Swami Temple. तो यहाँ से ये न्यूज़ में आया है.
तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर पद्मनाभा स्वामी टेम्पल. The origin of this temple is basically lost in the antiquity. इतना पुराना है. कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये टेम्पल 8th सेंचुरी में बना था, एंड जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो 18th सेंचुरी में बनाया गया था बाय दी त्रवनकोर महाराजा मर्थंडा वर्मा. It is the only major temple structure in Kerala that represents the amalgamation of Dravidian style of architecture and the indigenous feature of the architecture of Kerala. तो इसमें ड्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी है और आर्किटेक्चर ऑफ केरला भी है, इसका ब्लेंड है. इट इज वन ऑफ द फेमस वैष्णव श्राइन्स इन साउथ इंडिया, and it is one of the few temples where Lord Vishnu is represented in reclining form, lying on Adishesha and Brahma, the creator. So they are seated on a lotus stem from the navel of Lord Vishnu. So this is important. The representation is important. Lord Vishnu is represented in a reclining form, lying on Adidesha and Brahma, who's the creator, who's seated on the lotus, and that stems from the navel of Lord Vishnu. Feature is, इसका जो गोपुरम है, जो गेटवे है टेम्पल का, वो बहुत सिमिलर है टू द टेम्पल्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल. दे आर मोस्टली फाउंड इन तमिलनाडु, एंड देयर इज नो अदर टेम्पल इन केरला जिसमें इस तरह का गोपुरम बना हुआ हो, इतना इलेबोरेट नेचर का गोपुरम हो. दैट इज ओनली इन दिस पद्मनाभा स्वामी टेम्पल. Lastly, we have BONALU festival. BONALU is an annual festival which is celebrated in twin cities of Hyderabad and Secunderabad, which are parts of Telangana. दोनों जगह पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है. This festival is dedicated to goddess Mahakali, as per the belief, which is the ferocious avatar of goddess Durga. यहाँ पे बोनाम वर्ड जो यूज किया जाता है, इट मीन्स मील और फीस्ट इन तेलुगु. इसीलिए इस फेस्टिवल के दौरान जो डिवोटीज हैं, दे ऑफर राइस कुक्ड विद मिल्क एंड जैगरी in an earthen or brass pot, which is decorated by neem leaves and turmeric and vermilion. And then women carry these pot on their head to the temple. So apart from Yelamma, during Bonalu festival, the different forms of Mahakali are worshipped, which includes Mayasama, Doklamma, Pedamma, Puchamma, Yelamma, Porelamma, Ankalamma. These are different, forms of Mahakali. These are worshipped in this festival, Bonalu festival. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.